Assalamu alaikum students. In today's lecture, we will learn about hydrogen spectrum and Planck's quantum theory. Hydrogen spectrum will involve further the different spectral lines, that is Lyman series, Balmer series, Paschen, Brecht and Puffer series. Okay. Now here the next comes. First of all, you should know what about the electromagnetic spectrum. If a substance is heated, or you have seen a rainbow, right? Rainbow is consisting of a number of colors in it. Each color has its own wavelength, its own frequency. Now what the wavelength is? The distance between two troughs and two crests, that is termed as the wavelength, right? Now here we have a complete electromagnetic spectra of all types of the radiations are being mentioned over here. On visible spectra is just a small part of this region, that is of this spectrum. When a substance is heated, it gives the radiations, and when these radiations they pass through a prism, they will give you different colors out of it, right? Each color have its own wavelength and its own frequency, right? Now here we have the different one regions in it. As I told you earlier, we can see only the visible region, that is the having frequency or having the wavelength in between 400 to 700 nanometers, right? Now before this and after this, there are a number of regions, the radiations of which we cannot see, right? Here we have before this visible region, there are present gamma rays, X-rays, ultraviolet rays. As we are moving from left to right in this spectra, so the frequency of the radiation is on decrease while the wavelength is on increase, right? आप lower wavelength से ये downwards, here it is given the wavelength, lower wavelength से larger one wavelength की तरफ जा रहे हैं. Now here it is mentioned in meters it is given, while frequency is given in hertz at the top above there. तो आप हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, while in the lambda, or you say the wavelength of waves के reference से you are moving from the shorter wavelength towards that of the longer wavelength, right? Now here we have different regions of it: X-rays, then gamma rays first of all, then X-rays, then ultraviolet, then we have a visible region, this one which is being shown over here, and then IR region, that is infrared region, microwave, radio waves, and then we have the long one, sound radio waves, or the sound waves will be there, right? Now this is given to you just to understand, but what is meant by that of the spectra. It is a visual display of the different one lines, or you say the different one color pattern produced by a particular substance, right? When it is heated or when it is placed in the light, or you say in the discharge tube. So what the visual display it is going to produce after the radiation generated from it, they are passing through that of the prism, the spectra is given out. So this is the different regions of the spectra are being given here. Now here the types of spectrums are given. There are two types of spectra basically, one which is called the emission spectra and other one which is called the absorption spectra, on the base of that whether the radiation is absorbed by the system or whether it is given out by the system, right? So what is the difference between them? Let's try to understand them. Consider an atom that is having in the center, there is present a nucleus, there is present an outer orbit, and other outer orbit is present, two orbits are there, and there is present an electron in the first one orbit, right? Suppose when this electron is moving to the above one, higher one orbit, when it has to move from the lower orbit to the higher orbit, it needs energy to break this amount of energy which it is carrying over there, and to move to the upward, the upper one level,
from the ground state. For this, it has to absorb amount of energy. So you have to heat the system, right? Or heat this atom, or give it light, so that this electron will become excited. It will absorb amount of energy, and it will move in the higher level of energy, right? In doing so, it has absorbed some radiation. It has absorbed some radiation in the form of photons, right? So the spectrum which is considered under this condition, that is termed as an absorption spectra. जब इसको कंसिडर करते हुए कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है और वो मूव किया है फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, इसको लेकर जब स्पेक्ट्रा बनेगा, जब इसको आप एग्जामिन करेंगे तो या ऑब्जर्व करेंगे, तो देन इट विल बी टर्म्ड एज अ absorption spectra. And if the spectral lines are produced when the electron from the excited state, it turned back to its original state. As you know very well, everything want to be stabilized. So the electron which has moved to the higher energy level, it is not stable there. It want to be stable, so it will move back to its original place. When it will turn to its original place, in doing so, definitely it was at an excited state, and when it will be coming back at the lower energy level, what will happen? The energy of amount which it has absorbed earlier, that will be given out. That will be given out in the form of the radiation, right? Maybe it has absorbed the energy, if we say from the visible spectrum, let's say, so then I can say it has absorbed energy in the range of the blue light, or it has absorbed energy in the range of the red light. So when it will come back to its original state, from the excited state to the ground state, or from the higher energy level to the ground state or the lower energy level, so what will happen? It will emit the same radiations, that is giving a particular spectral line in the spectra when it is observed, right? So maybe it is equivalent to that of the amount of the radiation in the blue one region, or for the red region, or any other region of the visible spectra, or maybe beyond this or after this, the ultraviolet region or IR region, or many other regions are there in which it can be observed. So this is termed as an emission spectra. The emission spectra is formed when the electron jumps from higher energy level to the lower energy level, so that it will emit the amount of radiation. Where it has emitted the radiation, there will be a brightness generated, or a spectral line will be produced in the spectra. So this is termed as the uh, emission spectra, right? For each one, this transition from the higher energy level to that of the lower energy level, it will be a transition. It will emit the amount of radiation, right? So this is what we say will form the emission spectra. Now, continuous spectra is formed when there is continuous emission of the radiation, just like that of a rainbow, right? But if we are going to observe for the atoms, it is going to produce basically the line spectra. Line spectra means, as you can see, there are different energy levels, and in these different energy levels there are gaps in between. या तो वो इनके दरमियान में स्पेस की बजाय और भी बहुत सारे लेवल्स हों, तो थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस के साथ में वेयर इज द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम upper to the lower one levels, so that the continuous spectra can be generated. But there are gaps, large one gaps are being present between that of the two energy levels, right? So for each transition there will be an interval, right? So we will get, instead of a continuous spectra, there will be formation of a line spectra. ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में हर कलर जो है वो emit हो रहा है, no, हर कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही थी, बल्कि उसमें से कुछ कलर की रेडिएशन इट इज बीइंग एब्जॉर्ब, क्योंकि different energy levels, they have different energy, right? So when the substance has to come back to the lower one level, so it has to release the same amount of energy, right? Suppose if an electron has to move from the first energy level to the second one energy level,
that energy will be different. Then it has to move from first one to the third one level, right? And it will come, when it will come back from third to the first one, definitely the amount of radiation given out will be different as compared to the amount of radiation given out from when it travels from second energy level to the first one energy level. Try to understand this point, that line spectra is produced due to the gaps which are present between the different energy levels in an atom, right? Each orbit has its own specific amount of energy, and if electron has to move from the higher energy level to the lower energy level, the energy emitted will be different for each level. It is not in the continuous manner, but it will be in a interval one manner, that it will give you a line spectra instead of the continuous spectra. So first aspect तो यही है कि you should know that whenever the atoms are considered, they will produce line spectra. They will not produce the continuous spectra. And secondly, mostly they are observed under the emission spectra, right? Not under the absorption. Although they are also being utilized, but mostly emission spectra are produced, which gives the clear picture of an atom, right? Now here it is given the hydrogen spectra. Hydrogen spectra was observed by Bohr when he heated the hydrogen atoms. This can be done by means of heating, as well as when you are going to pass the electric current or electric arc through the atom, right? So that when the radiations which are produced from them, when they are passed through that of the prism, it is going to resolve into different spectral lines, as it is given in the form of an emission spectra, which is mentioned here. So the different spectral lines are generated in the different regions of spectra. As I told you earlier, in the spectra, we move from the lower one wavelength towards the higher wavelength, or you say the higher frequency towards the lower one frequency, right? So in this we have a number of different regions. You will find their ultraviolet region, or the visible region, or the IR region. Especially in these regions, the spectral lines are observed for hydrogen. Here you can see by the name of the different scientists or the physicists who, what to say, they observe the different type of series of the spectral lines in the emission spectrum of hydrogen under these headings of ultraviolet, or the visible, or that of the IR regions, right? So different one, what you say, the series are being produced by name of the person. They are Lyman series, Balmer series, Paschen series, Bragg series, and Profound series. Lyman series is observed in the ultraviolet region, while the Balmer series observed under the heading of the visible region. Paschen, Bragg, and Profound series are observed in the infrared regions, right? Here we have the first one. Now what the difference is there? As I told you earlier, we are considering that this is the emission spectra which is observed by the different one scientists. So in the Lyman series, their electron has to come back to level 1, that is N1. फर्स्ट ऑर्बिट में उसको वापस आना है, चाहे ऊपर वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे प्रेजेंट है, right? So ये what the how does it is emission spectra is going to be generated? As I told you earlier, electron पहले energy absorb करके first one level से jump किया to the second or third to fourth or fifth or sixth one, or any of the level, or now it has reached from the ground state to the excited state. अब इसको फिर से अपने आप को स्टेबल करना है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पे इट इज नॉट स्टेबल, so it has to come back to its position, the original one, that is level 1, right? So in doing so, what it will do, it will lose the amount of energy which it has absorbed, right? So it will fall into the level 1 in Lyman series. Means you can say the destiny of electron
from any higher orbit is to the uh, level 1, that is shell number 1. चाहे वो ऊपर किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे प्रेजेंट था, उसको जब नीचे आना है लोअर लेवल पे फर्स्ट वन लेवल में, तो वो एनर्जी को इमिट करेगा और ये जो रेडिएशन है ये फॉल करेगी अंडर द लाइमैन सीरीज, क्योंकि द ऑब्जर्व वन रेडिएशंस वर बीइंग फाउंड ऑफ द रेंज ऑफ द ultraviolet region, right? Remember it, whenever it is going to move, electron has to come back from the second level to the first one level, so the radiation that is given out is of smaller wavelength and the frequency will be high. But as it has to jump from the seventh or the sixth one or from infinity to the first one, it will be of longer wavelength and it has the smaller energy, right? So this one is which you have to keep it in your minds, that the amount of energy or the wave number or the wavelength which is observed in this region, that is in accordance to the ultraviolet category, what the radiation are there of the particular wavelength or frequency which are in accordance to the ultraviolet region, they are observed here. ठीक है, तो ये आपके पास में कि इलेक्ट्रॉन ने जो जंप किया है फ्रॉम हायर लेवल से लोअर लेवल में, हमेशा उसको वापस फर्स्ट लेवल पर ही आना है अंडर द लाइमैन सीरीज, एंड इन डूइंग सो द अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो वो emit करेगा that will fall under the category of ultraviolet radiations, उससे मैच करेंगी इसकी जो रेडिएशंस हैं, ठीक है? हर लाइन की जो आपके पास में एनर्जी है दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि एवरी एनर्जी लेवल इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट वन एनर्जी लेवल, राइट? सो अपने उसके अकॉर्डेंस में जितना वो दूर है फर्स्ट वन लेवल से, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके लिहाज से उसमें जो है वो रिलीज करेगा, राइट जी? Now, the next one level is of Balmer series. This series can be seen under the heading of the visible spectra, because the emitted one radiations which are produced in it, or the spectral lines which are produced in it, they are observed in the visible region, right? Their frequencies and their wavelengths, they are matching to the visible region of the spectrum, right? So here you can see the difference. In Lyman series, the electron has to be back to the first one level, but in Balmer series, from every higher orbit, electron has to be back to the second level. याद रखिएगा, once again it is an emission spectra जिसमें इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल से हमेशा लोअर लेवल में आना है, राइट? और इन बामर सीरीज द लोअर लेवल जो कि हर दफ़ा कंसिडर किया जाएगा हर स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, वो सेकंड वन है, राइट? ऊपर से चाहे वो सिक्स वन से वापस आ रहा है या वो फिफ्थ वन से वापस आ रहा है या फोर्थ थर्ड और से वापस आ रहा है, एवरी टाइम इट हैज़ टू बी बैक टू द second energy level, और in doing so again it will emit radiations, और वो radiations जो हैं they are of the range of the radiations which are present in the Balmer series. Next higher is the Paston series, which are observed in the infrared region. Divide this infrared region into the three parts: near infrared, and then middle, and then we have the far infrared region. So here the Paston series, they are, you can see every time electron has to fall back from the higher energy level to the lower energy level, that is number 3. हर दफ़ा उसे थर्ड शेल में ही वापस आना है। तो यहाँ से जाते जाते जब हम लाइमन सीरीज से स्टार्ट लेते हैं, तो पहले आपके पास में इनकी जो वेवलेंथ थी बहुत शॉर्ट थी, जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी चेंज होती जा रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दे आर इन इनवर्स रीजन, राइट? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा के इक्वलेंट आती है। आपके पास में ये टर्म्स आपने याद रखनी है व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट दीज स्पेक्ट्रल लाइंस। देन ब्रेग सीरीज, you can see
There, every time the electron has to jump back from the higher energy level to the fourth shell, and in profound series it has to uh, come to the fifth one shell. Now here the limiting line is when electron from infinity is moving to the required one series, जिस भी सीरीज में आ रहा है, तो ये लिमिटिंग लाइन कहलाती है, जो आपके पास में इन्फिनिटी के साथ में उसने कब वापस आना है। और फर्स्ट लाइन वो है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट से मीन्स वट एवर, अगर आप बामर सीरीज में कह रहे हैं तो थर्ड लेवल से सेकंड में आने का ये इसकी फर्स्ट लाइन होगी, और जो इसकी जो लिमिटिंग लाइन होगी जब इसमें इन्फिनिटी से सेकंड लेवल पे वापस आना है तो वो इसकी लिमिटिंग लाइन कहलाएगी, राइट। Similarly, in the Lyman series में the first line of the spectra will be when electron has to be back from the second energy level to first one, और इसकी जो लिमिटिंग लाइन होगी जब इसने इन्फिनिटी से वापस आना है लेवल नंबर 1 में, एंड सेम इज फॉर ऑल द अदर। Now here this relationship is used for calculation of the different spectral lines जिसमें wave number that is being found। तो ये जो दैट इज इक्वल टू, और ये प्रीवियसली हमने जो वेव नंबर इक्वेशन डिराइव की है ये वो इक्वेशन है where the constants were all taken equivalent to that of the r, that is Rydberg constant, और उसके साथ में ब्रैकेट में आपके पास में आ जाता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस रिलेशन को आपने याद रखना है। r की एक फिक्स वैल्यू है, उस r की फिक्स वैल्यू को याद रखिए एंड यू हैव टू प्लेस इट एवरी टाइम ओवर हियर, और n1 की जगह आप जिस लेवल में उसको वापस आना है वो कंसिडर करेंगे, n2 की जगह जहाँ जिस लेवल से इसमें वापस आना है फ्रॉम द टॉप वन लेवल जो एक्साइटेड लेवल्स हैं, ये उसके लिए n2 यूज होगा एवरी टाइम फॉर ईच वेक्टर लाइन। सो दिस लाइन विल बी यूज्ड, सो द terms will be calculated in the form of the wave numbers। और wave number क्या है, how will you define it? That number of waves passing per unit length, that is termed as the wave number, right? So remember it, this formula you have to apply if you are asked, आपको कहा जाए कि जी Lyman series की जो first one line है उसका आपने जो कैलकुलेट करके दें वेव नंबर, तो how will you do that? One is n1 की जगह आप प्लेस करेंगे 1 का स्क्वायर, और n2 की जगह आप प्लेस करेंगे फर्स्ट वन लाइन में है ना, तो फर्स्ट लाइन से इसको सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, तो n2 की जगह आप प्लेस करेंगे n2 का 2 का स्क्वायर, ठीक है। और Rydberg कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू है, दैट इज गिवन इन योर बुक, सो यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। द वैल्यू इज गिवन, that is how much you have calculated it previously. It is, I think so, this one is 1.09678 in 10 power 7। ये आपके पास में आती है इसकी वैल्यू। इस वैल्यू को आपने फिक्स पक्का याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा जनाब। इस रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वेव नंबर of each spectral line in each of the type of the series, that is in Lyman series or Brecht series or profound series or whatever the series is under consideration. Now here once again the different spectral lines are shown in the form of what you say the wavelength along with that of their how much wavelength in nanometers which is being mentioned here. ठीक है, तो for different series when in the Lyman series it has to move from, क्या थी इसकी स्टार्टिंग लाइन, ये याद रखनी है आपने। इसकी फर्स्ट लाइन इज जहाँ पे इसको वापस आना है, दैट इज एवरी टाइम यू हैव टू राइट n1 जो कंसिडर किया जाएगा वो 1 है, 1, राइट। और n2 जो कंसिडर किया जाएगा दैट कैन बी एनी अदर हायर ऑर्बिट, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है। हियर इट इज गिवन, ये आपके पास में यू कैन सी द ये दिस वन इज, ये जो आपके पास में ये लाइमन सीरीज शो की हुई है। You can see as I told you earlier that it is observed under the ultraviolet region, और इसकी जो wavelengths है वो matching into this region, ये नैनोमीटर्स में मेंशन किए हुए हैं बेटे आपको, राइट। सो ये आपके पास में शॉर्टर वेवलेंथ से हायर वन वेवलेंथ की तरफ जो है जा रहा है ये आपके पास में, तो इस लिहाज से आपके पास जो है ये वैल्यूज बनेंगी। तो ये आपके पास में जनाब जाएगा लेमन सीरीज, और फिर ये बामर सीरीज के लिए, और ये पेस्टन सीरीज के लिए जिसमें लिखे हुए हैं, राइट।
बामर सीरीज के लिए एवरी टाइम n1 will be considered as 2 और n2 जो होगा n2 वो this one is n2, it is not n1, it is n2 जो होगा that can be any of the other 3 4 5 6 इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, जब क्वेश्चन सीरीज कंसिडर करोगे तो n1 will be every time 3 और n2 कैन बी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। सिमिलरली सेम इज फॉर ब्रेड सीरीज, स्टार्टिंग लाइन विल बी विद द 4 1 टू द 5 से 4 में वापस आना है, और अगर आप ले लें इसकी लिमिटिंग लाइन तो इन्फिनिटी से 4 में वापस आना है फॉर द ब्रेड सीरीज। एंड फॉर फुल सीरीज द स्टार्टिंग लाइन इज from 6th level to 5th level, and then limiting line is from infinity to the 5th level. Now here this is a very important question, ये आपको अक्सर पूछ लिया आता है पेपर में कि आप इसकी जो है लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन और इसकी जो लिमिटिंग लाइन है उसकी वेव नंबर कैलकुलेट करके दो, right? So here it is given with the different one series. For the first line n is considered as 1, n1 और n2 is n2, second level से इसको first level पे वापस आना है। So similarly आपके पास में इसको जो equation हम पीछे यूज करेंगे, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, न्यू बार इज इक्वल टू r in the bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, ये रिलेशनशिप यूज करते जाइए, आपके पास में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की वैल्यूज आती रहेंगी। रिमेंबर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर इट इज कैलकुलेट, ये वेव नंबर फर्स्ट वन लाइन का कैलकुलेट किया, ये सेकेंड वन का जहाँ पे n2 कंसिडर किया जाएगा 3, n1 वही रहेगा फॉर द लाइमन सीरीज थर्ड सीरीज के लिए, और ये आपके पास में चला जाएगा n2 कंसिडर एज 4। देखते चले जाएं, यहाँ पे आपके पास में चेंज आता चला जा रहा है, जो वेव नंबर रिक्वायर्ड है फॉर द फर्स्ट वन के लिए, एक ट्रांजिशन के लिए, दूसरी ट्रांजिशन के लिए, थर्ड ट्रांजिशन के लिए, फोर्थ वन और इन्फिनिटी के लिए। इन्फिनिटी का जब आप करेंगे तो इट विल बी टेकन एज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू जो है वो कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करके ये आपके पास में आ जाता है। तो इससे यू कैन कैलकुलेट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसके फर्स्ट वन लेवल से जो इन्फिनिटी के साथ करोगे वो इसका आपको जनाब दे देगा जो कैसे कहते हैं, दिस वन विल गिव यू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, राइट? नाउ हियर इट इज दिस फॉर दैट ऑफ द बामर सीरीज, this is just one of them is given, you can do for the others from your book, right? Again you have to apply the same formula, apply karo, fixed values की याद कर लीजिए, Rydberg constant की, you will get the different values, and now these are given in the meter में, ये आपको जो wave number है that is mentioned। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन और फिर लिमिटिंग लाइन, एज आई टोल्ड यू लिमिटिंग लाइन में एवरी टाइम यू हैव टू कंसिडर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी से टू दैट ऑफ द लेवल। अगर क्वेश्चन सीरीज की बात करें तो इट विल थर्ड ऑर्बिट वेयर इट हैज टू बी बैक। तो ये डिफरेंट इसकी सोल्यूशन लिए गए हैं, जो आंसर्स निकाले गए हैं, डू देम quickly, right? So you can understand that. Here for full series, first line starting from 5th one, 4th one, and then the above one line, first line is 5th one से इसको वापस 4 में आना है, तो एक ही ऑर्बिट का डिफरेंस डालोगे आप। सेकेंड लाइन के लिए आप 6 से 4th में आओगे, और अगर आप इन्फिनिटी से लाओगे तो आप इसको लिमिटिंग लाइन कहोगे। ठीक है, then there comes the Planck's quantum theory. Now here Planck's quantum theory was given by German physicist named as Max Planck in 1900. यहाँ पे उसने कंसिडर किया है इलेक्ट्रॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, राइट? और उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था दैट वाज डन ऑन द ब्लैक बॉडी, और उसमें जो रेडिएशंस जो रेडिएट की ब्लैक बॉडी ने, वहाँ से फिर इसने the main postulates of quantum theory they were being given out, or they were being mentioned here, right? Now here we have Planck's quantum theory. The main postulates of this theory are, once again, the electrons, they are considered as wave under this theory, और ये classical जो mechanics है इसके अंदर it is being observed. The main postulates of the quantum theory के पास में ये हैं that
वो जो हम बात कर रहे थे पीछे, दैट इलेक्ट्रॉन इट हैज़ टू इमिट रेडिएशन, तो वो जो इमिट रेडिएशन, सपोज इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फर्स्ट टाइम में लाइमन सीरीज में फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू द सेकंड, और अब सेकंड से फर्स्ट वन में वापस आया, तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी और इट इज़ ऑफ द स्पेसिफिक रेडिएशन। वो जो यहाँ से एनर्जी इमिट की है उसने, दैट विल बी टर्म्ड एज अ फोटोन ऑफ लाइट, एक पूरा पैकेट है एनर्जी का विच इज़ गिवन आउट। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया बैक फ्रॉम थर्ड लेवल से टू द फर्स्ट वन लेवल में, अब यहाँ से यहाँ आने में भी इसने कुछ एनर्जी रेडिएट की है। दिस वन इज एन अदर पैकेट ऑफ लाइट जो कि एमिट हुआ है, तो दिस वन इज एन अदर फोटोन। अब दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, तो फोटोन विच वॉज प्रोड्यूस फर्स्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप बैक किया फ्रॉम सेकंड से फर्स्ट वन लेवल में, और जब उसने जंप बैक किया फ्रॉम थर्ड से फर्स्ट वन में, तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा, दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, तो डेफिनेटली एनर्जी विल आल्सो बी different, right? Now main postulates are based upon it. Here he is talking about the same packets that atoms emit or absorb energy at intervals in the form of energy packets or wave packets, which are called quantas or the photons. Here it has, when electron ने jump किया from higher to the लोअर लेवल, तो एक वेव जनरेट हुई और इस वेव को हमने नाम दिया है फोटॉन्स का। तो फोटॉन्स क्या हैं? दीज आर द पैकेट्स ऑफ लाइट, राइट? और पैकेट्स ऑफ लाइट कहना भी ठीक नहीं है, दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी बेसिकली विच इज जनरेटेड, राइट? Then this energy is in a discontinuous or discrete manner. ये इसका second postulate है, right? Discrete manner means or discontinuous manner means what? आप जैसे मैंने पहले कहा कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना जाएगा तो एक ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा, फिर देयर विल बी एन इंटरवल कि वो कोई और हायर लेवल ले ले, वहां से जाके नीचे आएगा, तो देयर विल बी, अब ऐसा करने में जब उसने सेकंड से फर्स्ट में जंप किया है या थर्ड से फर्स्ट में जंप किया है, तो देर इज अ डिफरेंस, गैप है बीच में, तो इट द एनर्जी तो जनरेट हुई बट इट इज प्रोड्यूस इन द डिसकंटिन्यूअस मैनर, राइट? Here the next one is given, that is what is the photon, होता क्या है? Now here the photons are energy packets which helps the electrons to jump from one energy level to the another energy level, right? अब ये आपके पास में एक जनरल वन फॉर्म दिया हुआ है कि होते क्या हैं photons, उनको क्या आप कहेंगे, right? So in this diagram what the arrows are telling you that these are the photons which are emitted from the different energy levels, right? Now here what the properties of photons are there. Now this is not the one of the point in the what is the main postulates of the Planck's quantum theory, but this is an extra information given to you, that what does it mean by the photons, hote kya hai, how will you describe it, right? So it is given, properties of photons are there. Photon is a piece of energy, yes, having no mass. These are the electromagnetic radiations, it is just energy, there is no charge on it, they moves at the speed of light, right? They are considered as the waves, right? Energy of the photon is quantized. Quantized means comes in the form of packets, right? So each one is termed as a photon. Quantized means distributed or not in between, like a ladder में आपके पास में होते हैं, एक स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर थर्ड वन और फोर्थ वन स्टेप्स है, तो सिमिलर से है कि एक फोटोन पहले जनरेट हुआ, फिर दूसरी टाइप का, तीसरी टाइप का, फोर्थ टाइप का, तो दिस वन इज right. Now the next. Now these are the remaining one postulates of the Planck's quantum theory, that photons are emitted or absorbed in the whole numbers and never in fractions. As you know that there are present, would you say, different energy levels to each. There are no intermediate, what you say, the half level or um, the three-quarter level. No, it has to come back. Third level से ultimately second level में must आना है. It has to come back to space में stay नहीं करना, but it has to come to the fixed energy level. So it will be in a particular एक पैकेट बनेगा आपके पास में. It will not be in fraction. आप ये नहीं कहेंगे 0.5 term या 1.5 of this or that, right? Now energy of photon is directly proportional to the frequency of radiation. This is the equation which is used, that E is proportional to mu, that energy of radiation is directly proportional to the frequency of radiation, right? So it can be given like this, E is equal to h mu, if considering that h is the constant of proportionality, h is the Planck's constant, and it is its value which is given in different units.
right? So this is the energy of a photon, which is given by h nu, right जी. एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल और थर्ड शेल के दरमियान का जो डिफरेंस है, उसमें जो एनर्जी इमिट की जाएगी उसका एच मीन डिफरेंट आएगा एज कंपेयर टू जो एनर्जी इमिट होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन टर्न्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट लेवल, उसका एच मीन डिफरेंट आएगा. एच की वैल्यू तो फिक्स है लेकिन फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट, so definitely energy will also be different. So energy will be higher if frequency is high, energy will be low if frequency is low. Right? Now the next one is here we have the relationship between that of the frequency of radiation and lambda. As I told you earlier, frequency is equal to 1 upon lambda. और अगर यहाँ पे आप c को consider कर लें as the speed of light, तो you can say frequency is equal to c upon lambda. ये आपके पास में आ जाता है. तो यहाँ पे अगर इसको प्लेस करें हम अगर एनर्जी की इक्वेशन में जो पीछे हमने अभी की है, E is equal to h nu, तो इक्वेशन टर्न्स लाइक दिस, E is equal to hc upon lambda. और अगर इससे हम निकालना चाहें वेव नंबर, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा पर यूनिट डिस्टेंस में. ये आपके पास में जितने नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल किए दैट इज टर्म्ड एज अ वेव नंबर. और अगर हम इस 1 अपॉन लैम्डा को प्लेस करें, इसकी जगह हम प्लेस कर दें इन द अबव इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में अगर आप इसको यूँ ले लें E इज इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा, तो इसकी जगह आप प्लेस कर सकते हैं न्यू पार. तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, वेव नंबर एंड लैम्डा. यहाँ से आप कोई सा भी कैलकुलेट पैरामीटर जो है वो किया जा सकता है. Done. This is all about the Planck's quantum theory. इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है that we have to do, right? और इसको अच्छी तरह एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है और फिर नेक्स्ट इसमें जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे इन द ग्रुप कि ये आपको कितना समझ में आया. न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है तो वो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के रेफरेंस से दिया हुआ है, उसी के साथ मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दिया हुआ है. ठीक है, ये हम बात करेंगे जब तब मैं बताऊंगी कि कैसे इसको करना है. डन. ओके.